start from the recitation of Holy Quran. So I would like to invite Mr. Hafiz Osama for recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Jazakallah. Now please, I will request all of you to please stand up for national anthem. To the Alumni Dinner of LSPS University of Lahore. You all are selected on the basis of the last 4 years performance. We have decided to make Alumni Club for you, and our director and honorable faculty requested you all to come here and participate. We will issue card of ambassador of change to all of you and will ensure you have meeting after every 6 months. We see your contribution in the society through your education. We ensure you all to strengthen the
we'll show you all strengthen the alumni club soon. So now, have a look at memorable video, please. I will request our Honorable Mr. Rasheed Mughal and Mr. Engineer Jawad to please come on the stage and beside here. Now, I will request Mr. Dr. Ali Sajid to come on the stage and please say something.
Thank you very much, Honorable Mr. Mughal and Engineer Zubair, a world-known personality in the field of quality and pride of Pakistan, no doubt. We take pride in your presence, both of you. The journey of Lahore School of Management, later on Lahore School of Professional Studies, was started approximately 5 years ago with a big bang at Royal Palm Hotel, Royal Palm Club, with more than 120 professionals from Lahore, 2 or 3 retired and serving, 2 or 3-star generals, ambassadors, professors and vice chancellors. The aim and vision was to create a relatively different kind of school or education institution whereby we can practice the modern techniques of teaching, testing methodologies with high-fi faculty, with more freedom of teaching and testing. Alhamdulillah, after the completion of 4 years, we have around 500 to 600 graduates who are working in various parts of countries, including defense services, big hospitals in the form of psychologists, civil services, DC Gujranwala, DC Sialkot and DC Gujranwala was also one of our students who were able to finish their Sunday program. And Alhamdulillah, by the grace of God, Allah ki rahmat aur barakat se, by the end of this year, maybe early part of next year, we will be crossing the psychological barrier of 1,000 students. And most of them are happy and what you call satisfied student, if not delighted. The journey of delight we are thinking in the coming years, where we are thinking to start our own journey with our own charter. और मुझे एक बड़ी स्टेटमेंट मशहूर याद आती है कि जब आप किसी काम का अज़्म कर लेते हैं तो कायनात का हर ज़रा मुतहरिक हो जाता है आपकी मदद करने के लिए। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ खोलने के जो सिलसिला था प्राइवेट इंस्टीट्यूट का 1987 में सीर बाबर ने शुरू किया और दाऊद साथ उसके थे रज़ाक दाऊद ये अरबपति खरबपति इन्होंने अपने इदारे चलाने के लिए लम्स के नाम से इदारा खोला तो नो डाउट इज एडिंग रियल वैल्यू बट ऑफ कोर्स विद वेरी fraction of the society and in most cases a leader for the lead of the society. NUST is serving to this great cause to a large extent, the great extent, and I was also, by the grace of God, has the honor to start their few programs in the early 90s or mid 90s. But the problem is, because of so-called military culture, academic freedom is also conspicuously missing there, which is the drawback of military-based institutions. They give you discipline, but they discourage innovation and creativity because of uniformity, and they in certain cases discourage out-of-the-box thinking, which is the part of the solution, not the part of the problem. I have the exposure of 8 years plus, and then 5 years ago I again left for US and taught for 1 or 2 semesters in USA. After the exposure of 9 years of teaching and studying in USA, I have a clear vision of quality of education in my mind. But because of certain constraint, I was not able to achieve my real dreams. That is one reason is I don't have my own charter, and for charter I don't have a couple of billions of dollars, if not rupees, if not dollars. But again, journey of 1,000 miles start from the first step. 3 years ago, ex-chairman HEC Punjab, Dr. Nizam suggested me, if you want to seek charter, you should have your own private affiliated institution with some of the Sarkari university. So on his advice, I also start affiliated model with University of Education, and alhamdulillah, we are entering the 3rd year. But I am still hopeful that in our lifetime we will see a new experiment for the university which is not funded by one state, which is not funded by big military organizations, but low middle class professors with a clear commitment for the
greater expansion of the humanity and for the spread of education. I'm very clear. I'm very hopeful. सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बथेरे हजार है शजर सायदार रहा. Yesterday by chance I was having a great meeting with one of the landowner close to Lahore School of Economics, and he said, why don't you join us and take our land? ये बिल्डिंग में मुझे किसी ने ऐसे दी थी, हम एक जॉइंट वेंचर शुरू करते हैं 25-30 करोड़ इन्वेस्टमेंट की, कि मैं बस 25-30 हज़ार फालतू नहीं होते, गाड़ी के टायर के चेंज करके पैसे मसला बनाते हैं. तो कहते अच्छा एक दूसरा इन्वेस्टर आ गया, ये जी मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी 25-50 साल से काम कर रहा हूँ, हम बिल्डिंग बनाते हैं, हमें पार्टनरशिप करो. तो 2 इम्पेडिमेंट थे, कल क्लियर हुए. अब तीसरा इम्पेडिमेंट HEC और चौथा है पंजाब असेंबली से इसका चार्टर पास करना. चार्टर पास हम 3 साल पहले जब हमने अपनी यूनिवर्सिटी का सफ़र शुरू किया था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, तो पता चला कि HEC से मेरी बात हुई. उन्होंने कहा 6 महीने में आपको NOC मिल जाएगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है. लेकिन चार्टर पंजाब असेंबली से हमने खुद लेना. 2 साल पहले जब मैंने पंजाब असेंबली में पता किया तो पता चला जी 10 करोड़ रुपये रेट है. वो कौन लेते हैं आप सबको पता ही है. मैं नाम लेके अपने आप को बर्बाद या गुनाहगार नहीं करना चाहता. हमने इलेक्शन लड़ना तो 10 करोड़ हमें दे देंगे, आपको चार्टर एक में मिल जाएगा. मैं पीछे हट गया कि इलेक्शन के बाद देखते हैं. अब इलेक्शन के बाद बज़ाहिर, मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानते हैं, कि बज़ाहिर बड़ी बड़ी करप्शन रुक गई है. अब 10 करोड़ हो सकता है, 0 हो जाए, हमारी कमिटमेंट हो. तो हमने दोबारा सफ़र शुरू की और मेरे पास 10 से 15 अमेरिकन और यूरोपियन PhDs का पूल है, जिन्होंने कहा कि आप सफ़र शुरू करेंगे तो हम आपके साथ हैं. ये वो सफ़र नहीं कि कदम बढ़ाओ तो हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे गायब हो जाते हैं. मेरे पास जो टीम है, जो इस टीम का मैं मेंबर हूँ रात में, इसमें कमिटेड सोल्जर्स हैं, डिवोटेड प्रोफेशनल्स हैं, जुनूनी पागल और खपकी भी बेहतर. अब आप मुझे लोग पागल इसलिए कहते हैं कि मैंने दुनिया का सबसे अच्छी ऑप्शन थी कनाडा में सेटल होना, जो सिटीजनशिप मैंने ली है, अमेरिका यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, शाम को गोल्फ खेलना और गर्मियों को पहाड़ों में गुजारना, कैलगरी की या कोलोराडो की. वो मैंने सारी ऑप्शन छोड़ के सबसे मुश्किल रास्ता इख्तियार किया कि अपना डिफेंस का मकान और ज़मीनें बेच के मैंने सारा कुछ एक यूनिवर्सिटी का अज़म किया और किराए के मकान में शिफ्ट हो गया. अल्लाह, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस सेक्रीफाइस को कबूल करेगा और अल्लाह ताला ये जो है सेक्रीफाइस है, कम्फर्ट जोन से निकल के चैलेंज जोन में घुसते हैं. और आप जो चंद सिलेक्टेड ग्रेजुएट्स आज आए हैं, उनकी आंखों में जो मुझे चमक नजर आ रही है, इस उम्र की गमाज है कि दे आर होपफुल एंड वी आर होपफुल. आज हमने 10-15 सिलेक्टेड ग्रेजुएट्स को रिक्वेस्ट की है यहाँ पे आए और ऐसे इन्वेस्टर ऑफ चेंज हमारे से सर्टिफिकेट लिए सोसाइटी में वैल्यू ऐड करने की स्ट्रगल का जो जज्बा हमने शुरू किया हुआ है उसको आगे बढ़ाए. तो मेरे पास बड़ी खूबसूरत और सीजन प्रोफेशनल्स अल्ताफ साहब भी बैठे हैं. अल्ताफ साहब आगे तशरीफ ले आए, यहाँ पे बैठे हैं. हमें आगे सीजन प्रोफेशनल नहीं, आप आगे तशरीफ ले आए. सर जी, अल्ताफ साहब पिछले 25-30 साल से एजुकेशन में है, लाहौर के एजुकेशन सेक्टर में. और मुझे हिम्मत देने वालों में ये भी है, 4-5 साल पहले मैं इनके पास भी गया था, इन्होंने भी मुझे इंकरेजमेंट दी. और लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमने 3-4 स्टेक होल्डर डायलॉग लाहौर में कराए, मुख्तलिफ फोरम्स पे लोगों से ख्यालात लिए ताकि हम सोसाइटी के ट्रेंड्स देखें. अब 1 से 2 साल बाद, 4 साल बाद हो सकता है कि 2 साल बाद जब हम एक गेट टुगेदर दोबारा करते हैं तो हो सकता है कि अल्लाह ताला का करम और फजल ज़्यादा बढ़ते, पहले भी है, मजीद बढ़ते. अब रहमतों की कमी तो नहीं है और बरकतों के लिए खुदा के खजाने खाली तो नहीं, और उम्मीदों के चिराग जलाने वालों को, बड़ी ख्वाबें देखने वालों को मंजिलें मिल ही जाती हैं बशर्ते के साथ ही साथ कमिटमेंट हो. थकन मुझे भी मारती है 12 घंटे रोज काम करने का, 7 days a week, और मैं कभी कभी 2 घंटे एक्स्ट्रा सो के पूरी कर देता हूँ. मेरे पास जो टीम में डेडिकेटेड सोल्जर्स के सरे फरिश्त है वो इंजीनियर जुबैर साहब हैं. ऐसे कमिटेड सोल्जर्स आपको, उनका नाम ग्लोबल लेवल पे है. एक स्टेज आएगी 2 साल 10 साल बाद पाकिस्तान की शनाख्त के हवाले से हो. और मुझे फख्र है कि 10-15 साल पहले ये केस में आए थे, तो घूमते घामते इन्होंने फैसला किया कि मैंने एमएस करना है और अब मेरी शनाख्त के हवाले से हो रही है. मुझे फख्र है. सो मैं लंबी बात नहीं करूँगा. मैं आज की तकरीब का मकसद क्या था, मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि सीखे
मैं रुखों के लिए हम मुसव्वरी तकरीब कुछ तो बारे मुलाकात चाहिए। आज मिलने का मकसद यही था कि 10, 12, 15 लाइक माइंडेड फोर्सेस मिल जाएं और मैं कुछ हाल दिल आपसे शेयर कर लूँ और कुछ आपकी सुन लूँ और हम आगे गुफ्तगू को लेके चलें। और पाकिस्तान के जो 3 का मॉडल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के फॉर एजुकेशन, जिसमें लम्स और GI के शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने सेपरेट ऑफ एजुकेशन के लिए बड़ा काम किया। दे आर ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट। उसके बाद फॉर पब्लिक सेक्टर सेपरेट ऑफ एजुकेशन, जिसमें NUST और UT जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। और तीसरा प्राइवेट सेक्टर को मैं इसलिए नहीं ला सकता कि उसमें से 60, 70%, 80% और ऑलवेज फॉर मनी। हम एक चौथा मॉडल पैदा करना चाह रहे हैं जिसमें फॉर एजुकेशन, फॉर मिडिल क्लास, बाय द मिडिल क्लास, फॉर द कंट्री विद न्यू एक्सपेरिमेंट्स, ब्रेकिंग द ओल्ड पैराडाइम्स एंड ब्रीचिंग द लिमिटिंग थॉट्स के लिए ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको सेठ बाबर अली होना चाहिए, मुराद अली का बेटा होना चाहिए। इसके लिए आपको आर्मी चीफ की सरपरस्ती चाहिए। इसके लिए आपको किसी बहुत बड़े पावर कॉरिडोर में आपकी एंट्री होना चाहिए। ये 4-5 मिथ्स हैं। ये इंशाल्लाह 4 साल में इसका पहला फेज तो हमने हल कर दिया है 5-6 साल में। मेरे साथ दोस्तों के नाम पे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने खूबसूरत लबाजे उड़े हुए थे तालीम के, मज़हब के, शरीयत के, और उन्होंने मुझे मायूस भी किया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। वो इवन उन्होंने मेरे डिपार्टमेंट में रह के सर्टन केसेस में मेरे साथ अनएथिकल काम किए। मुझे बाद में पता लगा, फिर मैंने उन लोगों से माफ़ी मांगी कि उन्होंने अनएथिकल काम किया, मुझे नहीं पता था, जिम्मेदार फिर भी मैं हूँ। और मेरी कोशिश यही होगी कि हम एक बैलेंस क्रिएट करें हाईटेक एजुकेशन में, न्यू एक्सपेरिमेंट में, उसके बाद इनोवेशन में, इनोवेशन इन टीचिंग, इनोवेशन इन टेस्टिंग, और चौथा है कि फैकल्टी के साथ मिडिल क्लास के बच्चों को मौका दें। अब ये सपना 4 साल में पहली फेज में तो मुकम्मल हो गया। सेकंड फेज हो सकता है 2 साल जारी रहे, हो सकता है 4 साल जारी रहे। 4-5 साल पहले जो पहली मीटिंग DHA क्लब में FFF सेक्टर में हुई थी, तो उसमें आप तशरीफ रखते थे अल्ताफ साहब। तो आपने उस वक्त भी मुझे काफ़ी लोगों ने मशवरा दिया कि अकेले नहीं होना, लेकिन 1000 का जो हम साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस कर रहे हैं 1 से 2 सेमेस्टर में, और शुरू में तजर्बों में सरकार की मुदाखलत, अफवाह फैक्ट्रियों का अमल दखल, जो फेसबुक पे और वेब पे तस्वीरें फैलाते थे कि जी ये तो फेक है और फॉल्स है, अब ये स्कैम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वो अपने दम तोड़ दी। और प्राइवेट लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए खूबसूरत चेहरे ओढ़ के जो धोखा दिया, हमने उसको भी कवर कर लिया। अब अगला फेज़ और फाइनल फेज़ हमारा है कि हम डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए कैसे दाखिल होंगे, HEC के महाज पे कैसे कामयाब होंगे, और पंजाब गवर्नमेंट में जहाँ पे हमारी ज़ीरो वाकफियत है, ज़ीरो पब्लिक लिस्टिंग है, ज़ीरो नेटवर्किंग है, स्पीड मनी के बगैर और रवायती तरीक़ों के बगैर हम कैसे इसको बिल पास करा सकेंगे। इसमें 2 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, हम थकेंगे नहीं। टीम में मेरे पास कमिटेड सोल्जर है और डिवोटेड और खपती और पागल भी हैं। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया में जितनी इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुई हैं ना, वो खपती और पागलों ने की हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मैडम क्यूरी 1920s, जिसने रेडियम को ईजाद किया 1930s में, और कैंसर हो गया उसको रेडियम को ईजाद करते करते। बच्चों को छोड़ के, बीवी बच्चों को सबको उसने खुदा हाफिज कर दिया हस्बैंड को, और एक कॉस्टली अटक गई। और पोलैंड की शनाख्त सिर्फ मैडम क्यूरी से। तो इन खपतियों ने, किसी ने सिर पे सेब गिरा तो 3rd लॉ ऑफ न्यूटन, 1st लॉ ऑफ न्यूटन दे दिया उस खपती ने, बजाय सेब को अल्हम्दुलिल्लाह के खाने का। और किसी खपती ने पेंसिल ईजाद कर दी, इत्तफाकन टकरे मारते मारते पेंसिल भी इत्तफाकन ईजाद हुई थी। तो जिस तरह मुझे ये बिल्डिंग किसी ने चाबी प्लेट में रख के दे दी, मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं, कहता जब होगा दे देना, हमारा कैंपस फेल हो गया, आप आ जाएंगे कैंपस में नहीं लेंगे। और कल किसी ने कहा कि हमारे पास 4-5 एकड़ ज़मीन है, साथ ही DHA के सामने आ जाए, यूनिवर्सिटी बना लेना है। मेरे पास कंस्ट्रक्शन में पैसे नहीं, कहते कंस्ट्रक्शन ग्रुप बुला जाए, आप आ जाए, इस्लामाबाद से आपने दुनिया ले ली। अब इस्लामाबाद में बज़ाहिर तो मेरी कोई वाकफियत नहीं है, ना मैं कोई MNA हूँ ना MP हूँ, लेकिन मेरे सैकड़ों हज़ारों 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट इस्लामाबाद, लाहौर के हर जगह पे बैठे हुए हैं, और 6 से 7 तो मेरे जनरल हैं जो 2-4 रिटायर्ड भी हो गए। तो मैं फिर उनके पाँव पकड़ूंगा जाके कि भाई स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के लिए हमें भी कुछ मदद करें। और अभी यासिर जैसे दोस्त भी हैं जिनकी नेक ख्वाहिशात मेरे साथ हैं,
हारिस भी मौजूद है यहाँ पे, बासित साहब भी मुझे उंगली पकड़ के रास्ता दिखाते कि कुछ और नहीं तो समय के फादर से कहूँगा जो उनके रिटायर्ड जनरल सर्विंग जनरल के स्टूडेंट शागिर्द होंगे, तो सब मिलजुल के कोई ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये मुझे पता है। मिरेकल हैपेंस टू दोज़ हू बिलीव। मैं इस मुख्तसर से गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूँ और वेलकम करता हूँ सियालकोट और बहावलपुर से हमारे 3-4 दोस्त और आए हैं जो इनको भी वेलकम करें। भट्टी साहब हमारे पहले पानियर स्टूडेंट में से हैं और इन्होंने मुझे ये बताया था जब इन्होंने ज्वाइन किया 4-5 साल पहले कि जी मैं आपके मुतालिक रिसर्च करके आया हूँ कि ये यहाँ पे मैं कुछ सीख सकूँगा, वरना डिग्री तो मुझे एमएससी कहीं से भी मिल जाती है। भट्टी साहब यही कहा था ना आप, चलो तो मुझे मिल जाती थी। अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ के LSM में आए। उसके बाद जफरवाल से हमारे एक दोस्त आए हैं जिनका उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ है, जफरवाल से क्या नाम है सर? सोहेल साहब। मोहसिन साहब सियालकोट में एस्पायर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है, ये भी हमारे ग्रेजुएट हैं। तो मैं देखता हूँ एक लॉन्ग क्यू है हमारी ग्रेजुएट्स की जो 400 से 600 के दरमियान में मुझे पूरा कैलकुलेट मैं नहीं कर सकता और आने वाले दिनों में हम देखेंगे 3 से 4 साल बाद 1000 का क्रॉस कर देंगे, वो बैरियर भी ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में 25 साल, मुझे 25वां साल हो गया पाकिस्तान में 4 यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, NUST, UIT, केस और चौथा ये इदारा। और आपको खुशी होगी और हैरानगी भी होगी कि साउथ एशिया का मैंने काफ़ी रिसर्च किया। साउथ एशिया में 25 साल में किसी प्रोफेसर को 4 यूनिवर्सिटियाँ जीरो से बनाने का अल्लाह ने सादत दी, आदम साहब को अल्लाह की सादत दी कि जीरो से स्टार्ट किया और इसको आखिरी में 1 मिनट लूँगा। UT लाहौर में वाइस चांसलर जनरल ने मुझे इस्लामाबाद आकर अप्रोच किया कि हमने तुम्हें पढ़ाया कि यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ बिजनेस खोलो, तो मैं कंफर्ट जोन में था, एफ्टर में मेरा घर था और मैं कंफर्टेबली फीलिंग करवा रहा था और पढ़ाता था क्लासें। एक आइडियल प्रोफेसर वाली लाइन थी। मैंने कहा जी मैं नहीं आ सकता। उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम्हें हमने पढ़ाया, पे बैक करो। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी पावर्स देंगे तो मैं आऊँगा। उन्होंने पावर्स दी मुझे जनरल के साथ। मैंने 10 लाख लोन लिया और 3 महीने के बाद हम अपने उस पर फॉर्म पे खड़े हो गए। 4 महीने के बाद उन्होंने मुझे कहा था सिर्फ MBA एग्जेक्टिव स्टार्ट करो और 2.5 साल बाद 7 प्रोग्राम चल रहे थे। सुबह 8 से रात 10 बजे तक IBM UT फुल होता था और हम 2.5 साल बाद 22 से 24 करोड़ कमा रहे थे, विच इज 1/4 ऑफ द बजट ऑफ UT लाहौर 2.5 साल में। मेरा चूंकि 4 साल कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हो गया। अगर मैं वहाँ रहता तो हो सकता है पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को हम फंड कर दें। अब इसी विजन के साथ हम यहाँ पे तो UIT में मुझे थोड़ा सा फ्री हैंड मिला, लेकिन ऑडिटर्स ने और रवायती जो थर्ड वर्ड की होती है तंग नजरी, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सका। मुझे 2 वाइस चांसलरशिप की ऑफर आई पिछले 3-4 सालों में। मैंने इसलिए नो कर दी कि उसमें भी नौकरी है, उसमें भी ऑडिट ऑब्जेक्शन है, उसमें भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो जो नए एक्सपेरिमेंट का जज्बा हमारे दिलों में है, जिसमें हर एक को टीचर को भी फ्री हैंड मिलता है और फैकल्टी भी एक्सपेरिमेंट करती है और स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में भी काम होता है, इस पर हम तजर्बे कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं इकबाल के एक शेर को कंक्लूड करूंगा कि समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़ परवाज़ है। तो ज़ौक़ परवाज़ जब तक आप में है तो राज जिंदगी आश्का होता है। मुझे याद आता है कि आप ये भी जफरवाल यशगढ़ से हमारी बच्ची ने सही आई और 2 साल में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई अपने खुद बताएगी। मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू के साथ, शुक्रिया के साथ, गॉड ब्लेस यू।